Dear students, today's topic of my lecture, motion in a plane, part 2. So you just see that what you have to learn in the part 2, addition of vectors by graphical method. Then I will explain triangles law of vector addition. After that, parallelogram law of vector addition. Then some numericals we have to take after discussing the special cases of parallelogram law of vector addition. And then polygon law vector addition and subtraction of vectors I will discuss in my next video. So first you see here addition of vectors by using the graphical method. So what is this graphical method? So for that purpose what we say that two or more vectors that may be added graphically by using the head to tail methods. दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं ग्राफिकली हेड एंड टेल मेथड से. सो व्हाट इज दैट हेड एंड टेल मेथड? So for that we take an example. We are taking two vectors a vector and b vector. हम दो vectors ले रहे हैं a vector and b vector जिनको हमको ऐड करना है. So now you see in the diagram here the two vectors are there which are represented by the two arrows. You can see here a vector and b vector. Okay, so two vectors which we have shown here, one by the blue color, another one by the red color. अब यहाँ पर हम वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करना है. तो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी हैव टू डू, वी मूव द वेक्टर b parallel to itself so as to place the tail of vector b on the head of vector a. हम b वेक्टर को मूव करेंगे पैरेलल टू इट जिसकी वजह से बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पर आ जाए और फिर हम एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज बी वेक्टर. और वो जो सिंगल वेक्टर है जो हमने ड्रॉ किया है टेल ऑफ ए वेक्टर से हेड ऑफ बी वेक्टर, वो आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. That is r vector equal to a vector plus b vector. देखें आप यहाँ पर you see that it moves. Then tail of b vector coincide with the head of a vector. अब हम एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ करेंगे टेल ऑफ ए वेक्टर से हेड ऑफ बी वेक्टर. तो ये सिंगल वेक्टर जो ड्रॉ हुआ दैट इज ओ आर वेक्टर विच इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. दिस इज द resultant of a vector and b vector, and this method is called graphical method or head to tail method. Now how we can find out its magnitude of this r vector? So for that purpose we use the triangles law of vector addition. Since you see that this resultant vector is the vector sum of two vectors and these are the three sides of the triangles. So that's why this method is also known as triangles law of vector addition, and the magnitude of this resultant vector we will find out by understanding triangles law of vector addition. Means in this diagram दो vectors दो साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इसको हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं और इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हम ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अंडरस्टैंड कर फाइंड आउट करेंगे. यू सी दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड. हियर यू सी दैट ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. If two vectors can be represented by two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely in magnitude as well as in direction by the third side of triangles taken in opposite order. Means
अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल्स की दो साइड पर सेम ऑर्डर में अगर रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा, बट उसका ऑर्डर होगा वो अपोजिट ऑर्डर होगा। तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन। आप डायग्राम में देखें, OP vector represented by A vector and PQ vector, they are in the same order, means head to tail, tail to head, then tail to head, but resultant is head to tail, so it is in opposite direction. So that's why we say that the resultant in magnitude as well as in direction is represented by the third side of the triangle taken in opposite order. अब हमको magnitude of r vector निकालना है. So for that purpose we consider the two vectors, vector A and vector B. They are represented by the two sides of the triangle by OP vector and PQ vector respectively, and let r vector be the magnitude, let r vector be the resultant of these two vectors, which is represented by OQ vector. Now we say that let OP vector equal to A vector, then OP equal to A, then PQ vector equal to B vector, that is PQ equal to B, means the magnitude PQ equal to B. Similarly, OQ vector equal to R vector in the form of magnitude OQ equal to R. Now we drop a perpendicular QN on OP produced. Then we take in triangle that you can see here in the dotted line, the QN perpendicular is drawn onto the OP produced. Then we take the triangle QNP. In this triangle we have to find out cos theta as well as sin theta. So cos theta equal to base upon hypotenuse and sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse. So you have to find out. So cos theta equal to Pn upon Pq, and then PQ is equal to B. So substitute this value here. So cos theta equal to Pn upon B and Pn equal to B cos theta. Mark this equation number 1. Similarly, find out in the same triangle sin theta. Sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse Qn upon PQ, and PQ is B. So Qn upon B, then Qn equal to B sin theta. Mark equation number 2. Then you see that here this ON can be written as OP plus PN. Then OP is A, PN is B cos theta we have calculated. So ON equal to A plus B cos theta. Mark this equation number 3. अब हम लेंगे right angle triangle ONQ, and in it we apply the Pythagoras theorem formula, that is OQ square equal to ON square plus NQ square, and substitute the values. OQ is R, so it becomes R square. ON is A plus B cos theta, so this becomes A plus B cos theta whole square. NQ is B sin theta, so this becomes B square sin square theta. Now open this by the formula A plus B whole square, so it comes A square plus 2AB cos theta plus B square sin square theta. You can see here R square equal to A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta plus B square sin square theta. From here you take common B square, then you will get within bracket cos square theta plus sin square theta, and this is equal to 1, as you know. Then R square equal to A square plus 2AB cos theta plus B square. Rearrange it. Then R equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Mark this equation number 4. So this is the magnitude of resultant vector R. Now how we can find out the direction?
the direction is always we calculate by tan of angle. So in the same triangle that we have to find out tan of angle. How you can find out? For that purpose, we go to the back. You see here, this resultant vector R, say that makes an angle alpha with a vector. Then this tan of angle, we will find out in the triangle O and Q, and which gives the direction of this resultant vector. You see here, let R vector makes an angle alpha with a vector, and in triangle O and Q, tan alpha equal to Qn upon On, perpendicular upon base, and Qn already calculated, b sin theta. On is OP plus Pn, and OP is A, and Pn is b cos theta, that we have calculated. Then substitute these values, then tan alpha equal to b sin theta upon A plus b cos theta, equation 5. Then from here alpha equal to tan inverse b sin theta upon A plus b cos theta. So by this equation we can find out the direction of r vector. इस इक्वेशन से हम r वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. Now another law which is known as parallelogram law of vector addition. Its derivation is similar as the derivation of triangle's law of vector addition. Only the definition is different, and you understand the definition. If two vectors to be added can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides. You can see in the diagram, two adjacent side of the parallelogram is OP and OS, and two vectors are represented here, A vector and B vector, by these two adjacent side of parallelogram. Then the resultant is represented completely in magnitude as well as in direction by the diagonal of the parallelogram passing through the starting point of the vectors. Therefore, this OQ is the diagonal which is the resultant of these two vectors, which are represented by the two adjacent side of parallelogram. Means जो दो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो कंप्लीटली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में उस डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा पैरेललोग्राम के, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से होना चाहिए. तो वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन एज वेल एज, मींस रिजल्टेंट्स की जो डायरेक्शन है वो उस डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में, राइट. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन द सेम वे वी हैव टू फाइंड आउट as we have done in case of the triangle's law of vector addition. So here we are saying OP vector equal to A vector and PQ vector equal to B vector. In magnitude, OP equal to A and PQ equal to B, and OQ vector equal to R vector. Magnitude is OQ equal to R. Similarly, we drop the perpendicular QN on OP produced, and in the triangle Q and P we will find out cos theta and sin theta. Same way as we have done in triangle's law of vector addition. So cos theta equal to Pn upon Pq, then Pn upon B. So from here Pn equal to P cos theta, mark this equation number 1. Then sin theta equal to Qn upon Pq equal to Qn upon B. Then Qn equal to B sin theta, mark this equation number 2. Now On can be written as OP plus Pn, and OP is A, Pn just you have find out, that is B sin theta, sorry, B cos theta from equation number 1. So On equal to A plus B cos theta, that is equation 3. Now we take the right angle triangle ONQ, that is OQ square equal to ON square plus NQ square. Substitute the values. OQ is R, so it is R square. ON is A plus B cos theta, then it becomes A plus B cos theta whole square, plus NQ is B sin theta, so this is B square sin square theta.
Now open this by using the formula of a plus b whole square. Then it becomes r square equal to a square plus 2ab cos theta plus b square cos square theta plus b square sin square theta. Take common b square from here. Then it becomes r square equal to a square plus 2ab cos theta plus b square कॉमन लिया विद इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है 1. तो इक्वेशन रह जाएगी आपकी r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर. रीअरेंज कर लीजिए. देन r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स 4. अब हमको डायरेक्शन निकालनी है. The same way as we have done in the triangles law vector addition, we will find out the direction. Let r vector makes an angle alpha with a vector. Then in triangle ONQ, tan alpha equal to QN upon ON equal to B sin theta upon OP plus PN. Substitute the values. Tan alpha equal to B sin theta upon A plus B cos theta. Mark equation number 5. Or alpha equal to tan inverse within bracket b sin theta upon a plus b cos theta. Now here we take some special cases. If theta equal to 0 degree, अगर theta equal to 0 degree हो जाएगा तो vector a and b vector both are in the same direction. Then r from equation 4 you substitute the value of theta equal to 0 degree. Equation 4 में आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दीजिए. देन r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0. cos 0 is 1, so r equal to under root a square plus b square plus 2ab. This is a plus b whole square, so r equal to under root a plus b whole square. Solve it, you will get r equal to a plus b. इक्वेशन 6. तो मैग्नीट्यूड आ गया. अगर दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a plus b मींस सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स मैग्नीट्यूड. And direction is tan alpha equal to b sin 0 upon a plus b cos 0. Equation 5 में वैल्यू पुट कर दीजिए. तो sin 0 is 0, cos 0 is 1, so it becomes tan alpha equal to 0 upon a plus b. Again it comes 0, so alpha equal to 0 डिग्री. इसका मतलब डायरेक्शन हो गई आपकी सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं. तो रिजल्टेंट की बेसिकली डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिसका मैग्नीट्यूड बिगर होता है जिस वेक्टर का. राइट, हियर बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, इसलिए अल्फा इक्वल टू 0 उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होगी. बट सेकंड केस अगर हम लेते हैं तो सेकंड केस में अगर आप देखेंगे तो सेकंड केस में इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मींस बोथ द वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री. आपको क्या मिलेगा r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री. cos 180 is minus 1, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. तो r इक्वल टू अंडर रूट a माइनस b होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कीजिए r इक्वल टू a माइनस b. मार्क इक्वेशन नंबर 7. अब डायरेक्शन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट डायरेक्शन हमेशा बिगर वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, इसलिए इसकी दो डायरेक्शन आ सकती हैं, आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री, डिपेंड्स ऑन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग इन विच डायरेक्शन. तो tan अल्फा इक्वल टू इक्वेशन 5 से b sin 180 डिग्री अपॉन a प्लस b cos 180 डिग्री. sin 180 डिग्री अगेन 0, तो 0 upon a minus b because cos 180 is minus 1, 0. But alpha may be 0 degree or 180 degree, depends on the magnitude of vectors. Means the direction of resultant vector is always towards the bigger vector. Okay. Now third case, if theta equal to 90 degree, then from equation 4 से आपको क्या मिलेगा r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0.
then r equal to under root a square plus b square. Mark equation number 8. So this is the magnitude when the two vectors are acting perpendicular to each other. Now डायरेक्शन के लिए इक्वेशन 5 से tan alpha equal to b sin 90 upon a plus b cos 90. Sin 90 is 1, cos 90 is 0, so that's why it comes b upon a. Then alpha equal to tan inverse b upon a. तो इस कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के ऊपर. उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आप कैलकुलेशन करके, और फिर नेचुरल टेंजेंट टेबल में देखकर इसकी वैल्यू आप लिखेंगे. वो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की. Now there are some numericals. You have to do the practice. There are 4 numericals I am given here, and the concept which you learn in this video, you apply the concept and then you solve these numericals. If you like my video, then like it, subscribe it, press the bell icon. Stay safe, stay healthy, learn physics by my YouTube channel. Thank you and have a nice day.